Dear students, Assalamu alaikum. Today's topic is circles. तो सर्कल के बारे में आपको मालूम होना चाहिए. सबसे पहले डिफाइन सर्कल, द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट. तो ये डिफिनेशन आपके मैथ पर भी दी गई है. द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट in the plane is called a circle. The fixed point is called center of the circle. मैं समझाऊंगा. ये center, you go equidistant points. एक ये डालाओ, you go fixed point. ये बनो circle. क्या बनो? Equidistant. को equal distance ये पर योतान equidistant ये पर योतान equal ये पर योतान ये यहाँ source equal distance. Go collection of points which are equidistant from a fixed point. Fixed point is called center of the circle. तो मैं बात करूँ फिक्स्ड सर्कल क्या कहूँ. तो सर्कल्स में क्या क्या वो हम आपको बताएंगे. ये रहा सर्कल, ये इसका सेंटर है. सेंटर से जो सर्कल तक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन इसको कहते हैं रेडियस. क्या कहते हैं? रेडियस. और लाइन सेगमेंट द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सर्कल इज कॉल्ड ए रेडियस. सेंटर पर सर्कलस तक डिस्टेंस यह रेडियस आसान. प्रत कुछ इक्वल आसान. अगर युकुन निमोन यह गई रेडियस, अगर यपर निमोन यह गई रेडियस, बोन कुन निमोन यह गई रेडियस, यहाँ तक गई रेडियस. यह सारी रेडियस इक्विडिस्टेंट यूत यह इक्वल आसान इक्वल. यह गो रेडियस. अम पद गो रेडियस पद गो कॉर्ड. क्या गो? कॉर्ड. कॉर्ड a line segment whose two points are on the circle. यानी कि A to B. इसको ना यहाँ से गो कॉर्ड. You go chord. You go chord. क्या अमिक ज पॉइंट कत पे सर्कलस पे तथ वन कॉर्ड. सु कॉर्ड सर्कल मज पास गए तथ वन डायमीटर. तथ वन डायमीटर. यानी कि सेंटर त्रावन कॉर्ड एक सेंटर मज यथ वन डायमीटर. क्या वन? डायमीटर. यथ वन डायमीटर. डायमीटर a line segment which passes through the center is called a diameter. Diameter आसान बराबर 2 times r. 2 times r. कत पर ये सेंटर पे होता है ये रेडियस, यहाँ क्या गई रेडियस. अवे लेखन डायमीटर 2 times r. सह गए रेडियस गए बराबर डायमीटर डिवाइड बाय 2. रेडियस बराबर डायमीटर डिवाइड बाय 2. The diameter divides a circle into 2 parts. Diameter divides a circle into 2 parts. Each part is called semicircle. Each part is called semicircle. Go diameter circle zihis karan yukunat orhan yukunat achhes वन semicircle. ये circle को half नेसा. तो यह से गो diameter. तो अम पद सर्कलस वो हेचुन सेगमेंट. बताए दिस कॉर्ड. कॉर्ड डिवाइड्स. मैं बोलूँ chord divides a circle into 2 parts. Into 2 parts. Each part is called segment. Yitch segment, yitch segment. You go minor segment. Yeah, one minor segment. Minor, you go major segment. Major segment. Yeah, one major. Minor segment, major. Chord divides a circle into 2 parts. Each part is called segment. Minor and major segment. तो अब सवाल है सेगमेंट किसको कहते हैं? सेगमेंट किसको कहते हैं? रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर. सु हिस्स युस कॉर्डस पे तथ कॉरस्पॉन्डिंग आर कि ये यथ एस वनन क्या वनन सेगमेंट. Region between chord and corresponding arc is called a segment. Is called a segment. इसके बाद आपको सीखना है सेक्टर किसको कहते हैं. सेक्टर. ये सेंटर, ये रेडियस ये रेडियस, ये रेडियस यथ वन सेक्टर. ये को योर माइनर सेक्टर या को मेजर सेक्टर. सेक्टर किसको कहते हैं? Region between the radii and corresponding arc. इस रेडियस दरमियान
तो बे आर्क के दरमियान उस रीजन आइस क्लोज तथ वन सेक्टर क्या वन सेक्टर region between radii and corresponding arc is called a sector तो सर्कल मैंने आपको बताया congruent circles गए circles with same radius ये सर्कल रेडियस है कुनी क्या आपके 5 सेंटीमीटर ब्याक 5 सेंटीमीटर आप कह सकते हैं these two circles are congruent circles congruent कम साथ रेडियस सेम तम पे एरिया ऑफ सर्कल बराबर एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर एरिया मीन्स गो क्लोज्ड फिगर अत एरिया मज अमुक मेजरमेंट कर दैट मीन्स एरिया डिनोट कर पाई आर स्क्वायर तो पद गो पेरीमीटर ऑफ सर्कल दैट इज आल्सो कॉल्ड सर्कमफ्रेंस So circumference is boundary of circle. Measurement of boundary of circle is called circumference. Or perimeter. So you have some parameter 2 pi r. You go perimeter. Perimeter of circle 2 pi r. The area of circle is pi r square. So mechu basan bechi at agar circle nimo at interior to exterior asan. Kya asan? Interior to exterior. इंटीरियर गो अंदरिम साइड एक्सटीरियर गो नेबरिम साइड और ये सर्कल बाउंड्री गो ब्याक गो थर्ड साइड इंटीरियर एक्सटीरियर ऑन दिस सर्कल दीज आर द 3 parts of a circle exercise 10.1 fill in the blanks पहला क्वेश्चन है fill in the blanks The center of a circle lies dash in the circle. Exterior, interior. It's a circle. Center go here. Achmon under ki asa ki nebar ki. Kacha asan? Asan interior. Go goni ki part se interior. Goni ki part se interior. Kacha interior. Doyum part, a point whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in dash of a circle. Agar circle chu amish radius chu circle never near. Big buju question. A point whose distance from the center of the circle is greater than its radius lies in point to radius never achmon here interior ki exterior ko doimis part of kya exterior ko doimis part of exterior ample trim part the longest chord of a circle is a dash of a circle maine introduction pehले so kya kehte hai diameter trim is part of diameter longest chord go diameter so third part an arc is a dash who when its ends are the ends of diameter you should circle you should diameter arc a continuous piece of a circle a piece agar nimhun tach es wanan arc mar sa arc yemik ends asin kath pe diameters pe go so circle nes bas kesh karun semicircle go hava es wanan semicircle the your surim part punji part segments of a circle is the region segment of a circle is the region between an arc and dash of a circle segment of a circle is the region between the arc and make a one division arc and chord go put in the blank ati chord chord I'm to last question a circle divides the plane
on which it lies in dash dash parts. It won me win. Cousin part with 3 parts. Exterior, interior, on the circle. Wo circle is pair. 3. Exterior, interior on the circle with 3 parts. Our is 3 parts. Yes, again. 3. Go Shemis part is go 3 parts. 3 parts. To go question number 1, 10.1 complete. Watch question number 2. Write true or false, give reasons for your answer. Write true or false, give reasons for your answer. Question number 2, one part, line segment joining the center. Line segment joining the center to any point on the circle is the radius of a circle. Now, the line segment, your joint current center, the X point circle is put. Such a radius, true. Such a radius doesn't get true. Quadratic part is true. The part, a circle has only finite number of equal chords. Finite गई, यम गंजराम नहीं. क्या गई? Infinite गई लाते दा. आज वन finite चा, false. Question to be, a circle has only finite number of equal chords. A circle has only finite number of equal chords. False. Finite, can't be actually finite. Finite to achieve, infinite to achieve. A circle has only finite number of equal chords. यानी कि हम कुछ रहे थे को false. It's false because it's false reason because a circle has infinite number of equal chords. Infinite number of equal chords. वो infinite लाते था. So one should 3 part. If a circle is divided into 3 equal arcs, each is a major arc, प्रत्येक is a big arc, false. Each is equal arc. So प्रत्येक is big arc ना, इम equal arc. क्या चे? Each is equal arc. इम equal arc. Reason देखूं because each is equal arc. The broad story part, a chord of a circle which is twice as long as its radius. A chord of a circle which is twice as long as its radius is the diameter of a circle. True. Radius is double karhun such diameter. Diameter. That is why it is called diameter. Good, true. I am told to dark. Question to point part. Sector is the region between the chord and corresponding arc. Sector na you sector you go segment. I'll go looking false. Sector 1 में का अच्छा बराबर. The sector is a region between the chord and its corresponding arc. I'll go looking false because sector is the region between the radii and its corresponding arc. Between the radii and its corresponding arc. इसका reason है. Same part. A circle is a plane figure. True. A circle is a plane figure. True. It should be the monthly exercise 10.1.